Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly and you are able to see the screen. Okay. Today we are going to see another chapter from pharmacology, that is nothing but the antipsychotic drugs. We have already seen nervous system drug acting on nervous system, like your general anesthetics we have seen, sedative hypnotics we have seen, we have seen anti-epileptic drugs, and we have also seen CNS stimulants. So next part is nothing but the antipsychotic drugs, drug used in the psychosis like mania and schizophrenia, bipolar disorders. So antipsychotics, antipsychotic drugs like drug used in the schizophrenia, then mania, bipolar disorders, and mood stabilizers. After this antipsychotics, we'll see antidepressants and then mood stabilizers. Actually, all these terms like antipsychotics, drug used in the schizophrenia or schizophrenia, then mania, hypomania, obsessive compulsive disorders, OBS, OCD, obsessive compulsive disorders, antidepressant, antidepressants, and mood stabilizers. All these terms comes together under one word known as a drug used in the psychopharmacology. Okay, so psychopharmacology also is one of the section of your pharmacology, and which deals with the drugs which acts, they are used in the psychosis, mania, bipolar disorders, antidepressants, all they come together in a psychopharmacology. So there is a one section, whole section known as psychopharmacology, right? So we'll see there are different disorders of your psychic, different disorders of your psyche. Psyche is nothing but the state of mind, presence of mind, and also your cognition function, thought process, thought process sorry. So different psychiatric illness. So psyche is nothing but the state of mind, and if there is a disturb the psyche, known as a psychiatric illness. Now psychiatric illness, they can be classified into two types. Psychiatric illness, they may be either psychosis, or neurosis. Psychosis or neurosis. Psychosis means, psychosis means the patient
is unaware. Patient is unaware that he is suffering from some disorder. That means here insight is absent. Insight is absent. Psychosis मतलब क्या कि यहाँ पे पेशेंट को मालूम ही नहीं हो रहा है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है. So in this case, patient is not aware that he is suffering from some kind of disorder or something bad is with him. Something is happening with him. So patient को समझ में नहीं आता कि अपने को डिसीज है या फिर आपको डिसऑर्डर है. So insight is absent means patient is not aware that he is suffering from some psychic disorder and he refuses to take the treatment. तो जिसको साइकोसिस है उसको डिसीज है या फिर डिसऑर्डर है या फिर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आता, उसको समझता नहीं है. एंड ही रिफ्यूजेस टू टेक द ट्रीटमेंट. He refuses to take the treatment. Okay. Now psychosis is nothing but the major disorder. It is a major disorder of your brain, psychosis, where insight is absent. In this there are different types like schizophrenia or schizophrenia. Schizophrenia means split mind. इसको अपन बोलते हैं split mind. मराठी में इसको बोलते हैं दुबंग लेला मन. Split mind है ना. मीन्स एक माइंड क्या है आपका ओवर एक्सेसिव है और एक माइंड क्या है आपका डिप्रेसिव है. तो इन दिस सिजोफ्रेनिक पेशेंट दे हैव टू माइंड और स्प्लिट माइंड और यू कैन से दे आर नोन एज अ स्प्लिट पर्सनैलिटी. स्प्लिट पर्सनैलिटी. द पेशेंट्स ऑफ सिजोफ्रेनिया दे आर हैविंग टू पर्सनैलिटी. स्प्लिट पर्सनैलिटी. एक पर्सनैलिटी होता है उनका कि ओवर एक्साइटमेंट या फिर है ना इरिटेबिलिटी या फिर बहुत ही पागल जैसे बिहेव करना है ना. एक पर्सनैलिटी होता है उनको, वो डिप्रेशन में जाते हैं. तो बोथ अफेक्टिव डिसऑर्डर, दैट मीन्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकी. पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकी इज प्रेजेंट इन द पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया. तो सिजोफ्रेनिया में दो टाइप है ना, दैट्स दो माइंड होते हैं उसमें. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्प्लिट माइंड. तो वो पेशेंट दो तरीके से बिहेव करता है. एक तो मैनियक जैसे बिहेव करता है, पागल जैसे है ना. मतलब उसमें अफेक्टिव सिम्टम्स होता है, मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स होता है प्लस उसमें नेगेटिव सिम्टम्स भी होता है, मतलब बायफेजिक होता है ये है ना. दो है ना. तो एग्रेसिव बिहेव करेगा, रेस्टलेसनेस बिहेव करेगा, पागल जैसे बात करेगा है ना, अनकंट्रोल्ड स्पीच, अनकंट्रोल्ड बॉडी है ना. कभी कभी मतलब 5 मिनट के अंदर आपको वायलेंट नजर आएगा. विद इन 5 मिनट ही विल बी वायलेंट एंड नेक्स्ट आफ्टर 10 मिनट ही विल बी डिप्रेस्ड है ना. सो सिजोफ्रेनिया मीन्स इट इज नथिंग बट द स्प्लिट माइंड और स्प्लिट पर्सनालिटी. तो पेशेंट में दो पर्सन का बिहेव करता है. एक तो बहुत ही वायलेंट बिहेव करेगा और एक तो बहुत ही डिप्रेस होगा. तो दैट इज नोन एज सिजोफ्रेनिया और स्प्लिट माइंड और स्प्लिट पर्सनैलिटी. एंड देन अनदर इज नथिंग बट द अफेक्टिव डिसऑर्डर. अनदर इज नथिंग बट द अफेक्टिव डिसऑर्डर. So in this mania means here only positive symptoms are there. यहाँ पे positive symptoms of psychic is there. तो पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकी, सो वायलेंट बिहेव करेगा, अनकंट्रोल्ड स्पीच रहेंगे उसके, अनकंट्रोल्ड थॉट रहेंगे, नो क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, क्लैरिटी नहीं रहेगा उसके थॉट में. अनकंट्रोल्ड थॉट है ना, अनकंट्रोल्ड थॉट, अनकंट्रोल्ड बॉडी बिहेवियर, अनकंट्रोल्ड स्पीच, कुछ भी बकेगा. ठीक है, कुछ भी बकेगा. एंड हालुसिनेशन, delusion and feeling like God, अपुनिज भगवान है ना. कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है, लेकिन सिजोफ्रेनिया मैनिया के पेशेंट को लगता है हर टाइम अपुनिज भगवान है. तो वो भगवान से बातें करेगा. सो है ना बेसलेस फैक्ट्स. सो ही विल डिनाई द फैक्ट्स. आपको मालूम है कि एक फैक्ट है क्या, पैरासिटामोल डिक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर. तो मैनियक पेशेंट, साइकिक पेशेंट को क्या है कि ही विल डिनाई दैट फैक्ट. तो ही विल स्पीक ऑन अ irrelevant topics, on a irrelevant fact, and he will not accept that.
So that is the symptoms of mania, schizophrenia. Mania comes under schizophrenia also. So schizophrenia दो आता है ना, mania plus depression. In the schizophrenia, patient may be having affective disorder as well as negative symptoms. So positive symptoms as well as negative symptoms. So that's why schizophrenia is known as split mind. Mania, the patient may have delusion, illusion, hallucination, है ना. इल्यूजन मतलब क्या कि उसको है ना अकेला चल रहा है रास्ते पे और उसको लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है ना. वो अकेला चल रहा है रास्ते पे, उसको लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कोई पीछा नहीं कर रहा है ना. अकेला बैठा है शांत पेड़ के नीचे और उसको लग रहा है मुझे कोई आवाज दे रहा है ना, मुझे कोई आवाज दे रहा है. कोई आवाज नहीं दे रहा, लेकिन उसको लग रहा है मुझे कोई आवाज दे रहा है. तो डिल्यूजन्स है ना, हेलुसिनेशंस है ना. हेलुसिनेशंस क्या रहेंगे कि वही उसको लगता है कि अपन ही भगवान है. So that affects the mind as well as thought process as well as the motor, even overall personality. Unsociability will be there. Socially वो खुद को isolate कर देगा, है ना. So irritability, violent behavior, है ना, split mind, then hallucination, delusion, है ना, and reckless things वो करेगा. And sometimes they can perform a very highly skilled activities during that manic attack. Okay, so mania is one of the positive symptoms and that affect the psyche of mind, and patient is mostly uncontrolled speech, uncontrolled behavior, है ना, violent behavior, uncontrolled thoughts. अलग ही दुनिया में जिएगा वो, मतलब है ना, अलग ही दुनिया में कि मैंने चांद को हाथ के ऊपर उठा लिया, तो आई हैव होल्ड होल मून इन माय वन हैंड. Mania. So he will not believe the facts and he will have that kind of behavior and he will have hypersexuality also, है ना. बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आएंगे, अलग दुनिया में जाएगा, है ना. तो in that schizophrenia and in the mania we used to call as a पगलापन. mania मतलब पागलापन, है ना, पागल हो चुका है वो पूरा, है ना. That is one of the affective disorder. In this, patient knows he is suffering from some psychic disorder or he is suffering from some medical condition, but he will deny it. He will deny it. Okay, he are not in this. Patient is not aware that he is suffering from psychic disorders. ना, मतलब जो पागल है, अगर उसको आप बोलेंगे कि आप पागल हो, तो वो आपको ही बोलेगा तुम ही पागल हो, मैं पागल नहीं. मतलब क्या, साइकोसिस में यहाँ पे पेशेंट को मालूम नहीं होता है, इनसाइड इज एब्सेंट. पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सर्टेन कंडीशन. तो इनसाइड इज एब्सेंट इन द साइकोसिस. इन द साइकोसिस देयर आर टू, schizophrenia and affective disorders. schizophrenia means split mind और दुबंगलेला मन, है ना, दो मन रहते हैं उसमें. देयर आर टू पर्सनैलिटी इन दैट पेशेंट. समटाइम्स ही विल बी लाइक इंटेलिजेंट पर्सन और ही विल बी लाइक वायलेंट पर्सन and immediately after that he will go in a depression. तो यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं schizophrenia में और नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं. एंड affective disorders, affective disorders means here either there will be a positive symptoms or there will be a negative symptom. For example, in case of mania there is a positive symptom. In case of depression there is a negative symptom. In case of depression there is negative symptoms. मतलब यहाँ पे he will not have interest in the surrounding. You will not have interest in the surrounding. Now, reasons for schizophrenia, mania, depression, bipolar disorder. So, bipolar disorder means here a repetitive attack of mania and depression. Repetitive attack of mania and depression. That is known as a bipolar disorder. Now, what are the reasons for this psychosis? Psychosis के reason क्या होते हैं? तो जैसे मान लीजिए सर मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की ने मुझे मना कर दिया, रिजेक्शन, है ना. वो रिजेक्शन से क्या हुआ, उसके माइंड में शॉक लगा, है ना. एक्सट्रीम इमोशंस, लॉस ऑफ लव्ड वंस, लॉस ऑफ लव्ड वंस, एक्सट्रीम इमोशंस और शॉक और ड्यू टू शॉक और ड्यू टू some incidents
जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया, एक्सट्रीम फियर, बहुत ही ज्यादा घबरा गया ना, बहुत ज्यादा घबराया, इतना घबराया कि वो पागल ही बन गए ना, या फिर बहुत ज्यादा खुश हो गए, इतना खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कभी मिली नहीं उसको, इतनी खुशी मिली, पागल हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसका कोई चाहने वाला मर गया तो उसके गम में रो रो के पागल हो जाएगा, राइट। तो लॉस ऑफ लव्ड वंस, है ना, लॉस ऑफ लव्ड वंस, है ना। देन सम इंसिडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई राइट्स होता है, हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो गया, तो उसमें किसी किसी को क्या होता है, कोई राइट्स हो गया तो उसमें किसी किसी को इतने मन पे आता है, वो इतना मन पे लेता है वो, कि वो उसके ऊपर ही थॉट थिंकिंग करता रहता है, एंड ही विल बिकम अ मैनियक पेशेंट। So schizophrenia, mania, both are the psychosis in which insight is absent. Patient is not aware that he is suffering from some disease and he will refuse to take the treatment. Okay. Depression means negative, so he will not take interest in anything. Okay. There is a affective thoughts. There is a and suicidal tendencies, and he will not able to perform well in the okay. अगर कोई भी पेशेंट है, he will, if he is suffering from psychosis, he will not perform well in the his field. जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वो लर्निंग में या फिर जो भी उसके परफॉर्मेंस है स्कूल में, कॉलेजेस में, तो दैट विल बी डिक्रीज्ड। या फिर कोई जॉब कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा, एंड ओके, देयर इज a decrease in the performance. One of my student was there last year, so she was from South area, and she was also suffering from this schizophrenia, right? And she was on a treatment, and in the middle she quit. मतलब ज्वाइन किया था उसने कोर्स, कुछ टाइम किया, बाद में बोला सर मुझे नहीं होता है, मुझे अटैक आता है, मैंने कहा, तो उसको मैंने फिर उसका रिफंड करके मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स psychosis means here patient is not aware that he is suffering from some medical condition, he is suffering from some psychic episodes, so insight is absent. Now in the schizophrenia is known as a split mind or split personality, and in this patient will have both positive as well as negative symptoms. Now in the affective disorders, they will have either positive symptoms or negative symptoms. So positive symptoms are in a mania, negative symptoms are in a depression, and alternate attack of mania and depression, that is in a bipolar disorder, Now neurosis, okay, so okay, neurosis, so it is a very severe condition. Psychosis बहुत ज़्यादा severe होता है, and psychosis is a dangerous condition. Psychosis is a dangerous psychosis need a treatment, and other also need a treatment, but psychosis यहाँ पे पेशेंट खुद को हार्म भी कर लेगा, पेशेंट विल ट्राई टू किल हिम, पेशेंट विल ट्राई टू हार्म हिमसेल्फ और टू द अदर पर्सन्स। तो यहाँ पे मैंने जब एक स्टोरी बोलता हूँ मैं बच्चों को, सो व्हेन आई वाज इन माय B.Pharm, आई यूज्ड टू वर्क मेडिकल, तो वेयर लॉट ऑफ पेशेंट यूज्ड टू कम, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट लाइक गायनेक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, एक्सीडेंट पेशेंट, psychic patient. So one day I was doing my job. It was around 1 p.m. It was late night, 1 a.m. सर, है ना। एक मेडिकल पे मैं जॉब करता था, वहाँ पे हॉस्पिटल था बड़ा, वहाँ पे मेडिकल में नाइट ड्यूटी रहता था मेरा, दिन में कॉलेज करता था, रात में नाइट ड्यूटी वहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट, सॉरी सिजोफ्रेनिक नहीं था वो, बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको, वो एक पेशेंट एडमिट हो गया। उसने क्या किया, खुद को ही वॉशरूम में बंद कर लिया और हाथ में रॉड लेके बैठा, है ना। तो उसको पूरा हॉस्पिटल उसको बाहर लाने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था बाहर ही नहीं आ रहा था वो, ठीक है। तो अगर, है ना, हमने क्या किया, लॉक तोड़ दिया दरवाजे का और अंदर झांकने का ट्राई किया, तो उसने एक के सर के ऊपर दे मारा था। मतलब दे यूज टू बिहेव वायलेंट बिहेवियर करता है, एंड उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में एक ही टाइम पे बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आते हैं, एंड देयर इज अ मेंटल क्लाउडिंग, तो थॉट प्रोसेस इज अफेक्टेड, एंड सोशल बिहेवियर इज अफेक्टेड, है ना। बहुत ज़्यादा
चिल्लाएगा, बहुत ज्यादा रोएगा, है ना. So that like now second, okay, second is nothing but the neurosis. Neurosis is what? In the neurosis, the patient knows that he is suffering from some kind of disease. So here patient is aware. So insight is present. Insight present मतलब क्या? Patient को पता होता है कि I am having some disease. So neurosis, it is a less serious condition. Psychosis is a very serious condition. Neurosis is a less serious condition. But in case of neurosis, so treatment is also required in case of neurosis, but it is a less seriousness, है ना. But psychosis is a serious condition, ना. Neurosis is a less serious condition. In psychosis, insight is absent, मतलब patient is not aware that he is suffering from some kind of disease. But in case of neurosis, so insight is present, patient understands something is happening to me. So he used to he obeys to take the treatment. मतलब यहाँ पे न्यूरोसिस में पेशेंट को मालूम भी होता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है अपने साथ, और वो ट्रीटमेंट के लिए ओबे भी करता है. ही कैन टेक ए ट्रीटमेंट, ही विल, है ना, ओबे द ट्रीटमेंट. बट इन केस ऑफ साइकोसिस द पेशेंट रिफ्यूज टू टेक द ट्रीटमेंट. नाउ इन द न्यूरोसिस यू आर डिफरेंट डिसीज लाइक ओसीडी. ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज, है ना. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज ओसीडी मतलब कुछ कुछ लोगों को आदत होता है, देखो कुछ ना किया 5-10 मिनट के बाद में जाएगा, हाथ धो के आएगा, है ना. हाथ धो के आएगा, बैठेगा, बैठा शांत बैठेगा, फिर से 5-10 मिनट के जाएगा, हाथ धो के आएगा. मतलब उसके हाथ गंदे नहीं है, वो सिर्फ हाथ धो के बैठा है, फिर भी 10 बार जाएगा, हाथ धो के आएगा. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. तो इट मेक ए कंपल्शन फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी. तो इन दैट पेशेंट देयर इज अ ऑब्सेशन फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी. सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. Now phobia means डर. Phobia means fear. Phobia means fear. So in this type of neurosis, the patient is having fear to something. ना, fear होता है, इसको डर होता है. जैसे मान लीजिए ऊंचाई का डर, है ना, हाइट का फोबिया, है ना, हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, है ना. Phobia means fear. So fear will be of anything like fear of height, fear of driving, fear of, you know, fear of water. Okay, so phobia. Then anxiety. Anxiety is nothing but the simple tension, simple apprehension, so unclarity of thought. Then this is a PTSD. PTSD मतलब post ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब कोई ट्रॉमा लगा है, मेंटल ट्रॉमा लगा है या फिर फिजिकल ट्रॉमा है, तो उसके बाद में स्ट्रेस आता है उसको. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दैट इज अ न्यूरोसिस. लास्ट वन इज अ बुलिमिया. लास्ट वन इज अ बुलिमिया. बुलिमिया मीन्स हियर इन दिस केस, तो देयर इज अ, है ना, देयर इज अ, मतलब ये क्या है, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग. ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग. तो इतना ज्यादा खाता है वो, बुलिमिया. बुलिमिया मीन्स ईटिंग डिसऑर्डर. तो ईटिंग डिसऑर्डर मतलब वो सिर्फ उसको खाना खाने का ही मन करता है, दूसरा कुछ नहीं. वो सिर्फ खाना खाता है, दूसरा कुछ नहीं. सो बुलिमिया इज नथिंग बट द ईटिंग डिसऑर्डर. तो है ना, पेशेंट यूज टू ईट लॉट ऑफ, है ना, कभी भी उसको खाना ही खाना है, बुलिमिया. ओके, सो साइकोसिस inside present, neurosis inside absent. Psychosis is a dangerous condition, severe condition, and medical emergency is required sometimes. In the psychosis, you have schizophrenia. You know, schizophrenia means split mind or split personality or dubam lelaman. In that both positive as well as negative symptoms are there. Positive symptom मतलब क्या, ओवर एक्सेसिव, है ना, एक्सेसिव रिएक्टिवनेस, है ना, ओवर रिएक्टिवनेस, वायलेंट बिहेवियर. ओके, देन नेगेटिव सिम्टम मीन्स डिप्रेशन हो गया, वो रिएक्ट नहीं करेगा. बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिम्टम्स आर इन schizophrenia. Mania means here only positive symptoms are there. Depression, negative symptoms are there, and alternate attack of mania and depression is known as a bipolar disorder.
अल्टरनेट अटैक ऑफ मैनिया एंड डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। न्यूरोसिस में आता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबियाज, देन एंजाइटी, देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड बुलिमिया, राइट। नाउ इन दिस केस, so here is a one hypothesis known as the dopamine hypothesis। यहाँ पे एक हाइपोथेसिस है, उसको बोलते हैं अपन डोपामाइन हाइपोथेसिस। तो डोपामाइन हाइपोथेसिस इज रिलेटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीसाइकोटिक, ट्रीटमेंट ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। तो मतलब क्या कि इन दिस केस, इन द साइकोसिस देयर इज अ increased activity of dopamine in the substantia nigra part of your brain. Here dopamine hypothesis is known as a, so increase the dopamine activity or dopaminergic neurons. They release the dopamine in the negro substantia nigra part or nigrostriatal part. So because of this increased activity of dopamine, increased activity of serotonin, यहाँ पे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का लेवल बढ़ता है और डोपामाइन का लेवल बढ़ता है इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन। देयर आर डिफरेंट पार्ट, विल सी कि कौन से पार्ट में अगर बढ़ गया तो क्या होता है, सी। ओके, सो नेक्स्ट इज नथिंग बट दैट इज नोन एज अ डोपामाइन हाइपोथेसिस और अमाइन हाइपोथेसिस। सो देयर इज अ definite cause increase the level of dopamine or 5-HT in the some part of brain. That's why there is a change in the psychic behavior as well as social behavior, known as a psychiatric illness or psychopharmacology. Remember, okay? Now we'll see the next. Now, drug which are used to treat the psychosis. Drug which are used to treat the psychosis, they are known as है ना, साइकोसिस के लिए, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, सभी साइकोसिस के लिए। तो ड्रग विच आर यूज्ड इन द मेजर साइकोसिस, तो रिमेंबर इस सिजोफ्रेनिया, मैनिया, दे आर नोन एज अ मेजर साइकोसिस, जिनको मेजर साइकोसिस बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज अ माइनर साइकोसिस। सो ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर साइकोसिस which have calming effect on your nerves, which will which will produce a calming effect. They will calm down your nerve. आपका जो एक्साइटमेंट हो चुका है वो क्या करेगा, काम करेगा, मतलब शांत करेगा। ड्रग विच प्रोड्यूसेस calming effect without causing the hypnosis, without causing the hypnosis, मतलब आपको नींद नहीं लाएगा, लेकिन आपका जो एक्साइटेड न्यूरॉन्स है या माइंड है उसको ट्रैंक्विलाइज करेगा। तो ट्रैंक्विलाइजर्स और न्यूरोलेप्टिक्स और एंटीसाइकोटिक्स, these terms are the synonym for each other. Antipsychotics or tranquilizers or neuroleptic, both, all these three are the synonyms for each other. कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको, what do you mean by neuroleptic? Neuroleptic means major tranquilizer. It is known as a major tranquilizer. Drug used in the treatment of schizophrenia, mania, known as a major tranquilizer. And drug which are used in the treatment of anxiety disorder or obsessive compulsive disorders, they are known as a minor tranquilizers. जैसे आपको, जैसे इंसोम्निया में आप क्या यूज करते हो, डायजेपाम वगैरह, तो दे आर नोन एज अ माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स मीन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया एंड सिजोफ्रेनिया, राइट, रिमेंबर, ठीक है। नाउ एंजियोलाइटिक मीन्स व्हाट, दीज आर द ड्रग व्हिच विल डिक्रीज योर एंजाइटी एंड they are also known as a minor tranquilizer. And anxiolytic drugs, they are known as minor tranquilizers. Major tranquilizers means drug which are used in the treatment of mania, schizophrenia, bipolar disorders. Now antidepressant means what, drug which are used to prevent the, which are used to overcome the depression. Depression अगर है, अगर आप डिप्रेशन में गए हो ना, सर मला ती नाही म्हटली, मग आता तुझा डिप्रेशन मध्ये ना। एंटीडिप्रेशन मीन्स व्हाट, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो देखो साइकिक कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है आपका डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, दे आर इंक्रीज्ड, पर्टिकुलरली डोपामाइन एंड 5-HT, ये दो है, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन।
dopamine, 5-hydroxydopamine, they are increased in case of psychosis and they are decreased in case of depression. डिप्रेशन में क्या होता है कि ये डोपामाइन, 5-hydroxydopamine, नॉरएड्रेनालिन ये डिक्रीज होता है डिप्रेशन में, और साइकोसिस में क्या होता है कि ये इंक्रीज होता है. इतना याद रखना है आपको, राइट. सो एंजियोलाइटिक, एंटी डिप्रेशन, साइकोट्रोपिक और साइकोएक्टिव ड्रग, दे विल एक्चुअली मॉडिफाई द बिहेवियरल पैटर्न, है ना. साइकोट्रोपिक ड्रग मतलब क्या? सो दीज आर द ड्रग विच कैन मॉडिफाई योर बिहेवियर. ओके, psychotropic or psychoactive drug which selectively modifies your behavioral pattern or behavior. Now behavior depends on the 3-4 things, है ना. behavior किसके ऊपर डिपेंड होता है? 2-3 चीज के ऊपर डिपेंड होता है. पहला चीज है आपका cognition. behavior depends on the 3-4 things. Cognition means what? It is a function of brain to receive the stimuli. Okay. Cognition means what? Reception of environmental stimuli. Then conation. Okay, cognition, then affect. Then affect. Conation मतलब क्या है? Cognition मतलब क्या है? To receive something. To receive something. To receive or to pursue the environmental stimuli by your body. ना आपको सामने क्या है? सामने के ऊपर, सामने क्या चीज हो रहा है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं cognition. To learn or to cognize. Then next one is the affect. So after receiving this environmental stimuli, your brain will analyze that. Your brain will analyze the information received by the brain and it will form a pattern for action, है ना. आपके सामने कुछ आपके सामने एक व्यक्ति आया है, उसने आपको हाय हेलो कर दिया, तो आप भी उससे क्या करते हो? हाय हेलो. उसने अगर नाम पूछ लिया तो आप भी बाद में क्या करते हो? उसका नाम पूछते हो. है ना. कॉग्निशन मतलब क्या है? वो सामने वाला जब आपके बात कर रहा है हाय हेलो, वो परसिव किया आपने, आपके माइंड में परसिव हो गया, उसके बाद में आपके ब्रेन में एक पैटर्न डिसाइड होगा कि इसके साथ कैसे करना है ना. उसने हाय हेलो किया तो आप भी हाय हेलो करते हो. उसने अगर आपको हाथ उठाया तो आप क्या करते हो? आप डिसाइड करते हो 2 पैटर्न. एक तो उसके ऊपर हाथ उठाना है या फिर वहां से थोड़ा सा खिंच जाना है. तो दैट अफेक्ट. सो एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टू ए ब्रेन and formation of action pattern, that is known as the affect. Cognition means receiving of your external stimuli, right? Now next one is a conation. Conation means was actual behavior of response. Actual behavioral response, है ना. आपको एक क्या मिला? आपको एक स्टिमुलस मिला. आपके वो स्टिमुलस आपके ब्रेन ने रिसीव किया. That is known as a cognition. Whatever stimulus is received by your brain known as a cognition, right? Now affect means what? The formation of action pattern. Analyzing that stimulus by your brain and formation of action pattern. आपको जो भी स्टिमुलस मिला है, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा एंड एक उसके ऊपर एक्शन पैटर्न फॉर्म करेगा, इसके ऊपर क्या करना है. ठीक है. नाउ जो एक्चुअल एक्शन है उसको बोलेंगे कोनेशन. Cognition, affect, conation. So these 3 things will decide your behavior towards the something, right? Now you can also evaluate a drugs in animals, known as a preclinical evaluation. So evaluation of psychotropic drugs in the animals. Animals में आप psychotropic drugs evaluate कर सकते हो. जैसे by observing their behavior, है ना. So you might have in your pharmacology lab. के pharmacology lab में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं. जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है एक्टोफोटोमीटर. देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट इन योर फार्माकोलॉजी लैब नोन एज एक्टोफोटोमीटर. सो व्हाट दैट इंस्ट्रूमेंट? दैट इज इंस्ट्रूमेंट व्हिच स्टडीज द नेचुरल बिहेवियरल पैटर्न. सो यू कैन स्टडी द नेचुरल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एनिमल्स. नेचुरल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एनिमल्स बाय यूजिंग स्पॉन्टेनियस मोटर एक्टिविटी. Okay, that is done by एक्टोफोटोमीटर. You can check the natural behavior of mice. आप उसको माइस को उसमें रख दो और वो इधर उधर जाएगा, है ना. जितनी बार जाएगा उसका एक्टिविटी उतनी बार रिकॉर्ड होगा. नोन एज अ स्पॉन्टेनियस मोटर एक्टिविटी, राइट. नाउ नॉर्मल माइस का स्पॉन्टेनियस मोटर एक्टिविटी कम रहेगा, या फिर अगर वही माइस है उसको आप इधर उधर फेंक दो 1-2 बार हाथ से पकड़ के और फिर डाल दो,
तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, राइट। अगर वो माइस को आपने तकलीफ दिया, उसको फटका मारा, इधर उधर से मारा, या फिर उसको चटका दिया, so what will happen, the behavior of that mice will change, so it will act more, it will do more activity. So spontaneous motor activity you can check by actophotometer. Then you can also check the motor condition and muscle tone. You can also check the motor condition and muscle tone by using rotor rod test. आपके लैब में और एक apparatus होगा, rotor rod test बोलते हैं. It is known as a rotor rod, a rotating rod used to check the motor activity of muscles in the animals, right? You can also check the you can also check the behavior of your animals using the actophotometer. You can measure the spontaneous motor activity, and by using a rotor rod test or rotating rod apparatus, so you can use the motor coordination of that animal. Also, drug induced behavioral pattern you can study, this is emotional behavior and conditional neurosis. So there is one more apparatus known as elevated maze apparatus, so known as a conditional avoid response. मतलब क्या होता है कि एक वहाँ पे ना एक बॉक्स रहता है, बॉक्स में ऊपर से एक रॉड लटका हुआ रहता है, और उसमें एक अलार्म का सुविधा रहता है, अलार्म, और नीचे एक करंट देने के लिए भी अरेंजमेंट होता है, राइट। उसमें माइस को रखते हैं, और माइस रखने के बाद में इनिशियली माइस को लर्न कराते हैं, मतलब इनिशियली 1-2 बार करंट दिया ना तो माइस को समझ में आता क्या कहाँ जाओ, बट वो लर्न कर लेता है. ही विल लर्न दैट देयर इज वन रॉड, ओके, इफ करंट इज देयर, ओके, आई कैन गो एंड, है ना. तो पहले क्या करना है, माइस को ट्रेन करना पड़ता है. यू हैव टू पुट द माइस इन द बॉक्स एंड यू हैव टू ऑन द अलार्म लगाने का, बाद में करंट देने का, है ना. फिर से अलार्म लगाने का, करंट देने का. तो 2-3 बार ऐसे किया ना, 2-4 दिन तक वो लर्न करता है. ही विल लर्न एंड ही विल जंप ऑन दैट रॉड, है ना. आपका जो लकड़ी का रॉड होता है उसमें, ही विल जंप ऑन द रॉड बिफोर अप्लाइंग द करंट. करंट देने से पहले वो जंप करेगा. क्यों? जैसे आप अलार्म ऑन करते हो, उसको लगता है कि अभी करंट देने वाला है, वो फटक से ऊपर जाता है. तो दैट इज नथिंग बट द cognition pattern study, known as a conditional avoiding response. So you can study the behavioral pattern of animals in the lab also. So this doesn't concern with your GPAT. ये आपकी GPAT के लिए नहीं है, पर GPAT के लिए क्या है, remember neuroleptics और major tranquilizer are also known as a antipsychotic drug, है ना. Then ये 3 terms आपको मालूम होने चाहिए. They can ask in a GPAT these things. Okay. Now next is nothing but the how there is a development of psychosis. Psychosis क्यों होता है? No? अगर यहाँ पे ये समझ में आएगा ना, ये स्लाइड आपको, you can understand the mechanism of action, you can understand the adverse effect of antipsychotic drug. So this slide is important, you have to understand. Now what? Dopamine is a major neurotransmitter in the brain. Dopamine and its neurotransmission in the CNS, you have to understand. Dopamine is also precursor for noradrenaline, and it is a major inhibitory neurotransmitter in the noradrenergic pathway. Dopamine क्या है? One of the neurotransmitter in the brain, and it is also precursor for the synthesis of noradrenaline, and dopamine is a major inhibitory neurotransmitter in the brain, है ना. Now dopamine or dopaminergic activity or dopamine containing neuron. Dopaminergic neurons are present in the different part of your brain. तो dopamine containing neuron कहाँ पे होते हैं? तो dopamine containing neuron are present in the substantia nigra part of your brain. Substantia nigra part of your brain, or also known as the nigrostatial tract. इसको ही बोलते हैं nigrostatial tract, substantia nigra or nigrostatial tract. So dopamine containing neurons are also present in the mesolimbic system, or you can see mesolimbic system also known as a mesocortical tract. ना, मतलब ये पार्ट होता है. तो dopamine containing neurons, dopaminergic neurons are present in the substantia nigra part of your brain, also present in the mesolimbic system,
also present in the hypothalamus, also present in the CTZ, chemoreceptor trigger zone. So dopamine activity is present in the brain in a different areas like substantia nigra. So in the substantia nigra, also in the mesolimbic system or mesocortical tract, also in a hypothalamus, and also in a chemoreceptor trigger zone. Now release of dopamine in this area will have different functions. तो यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में डोपामाइन का रिलीज अगर होता है तो उसका एक्टिविटी क्या है, वो अलग एक्टिविटी देता है ना, वहां पे उसका अलग रोल है. सो इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट ऑफ योर ब्रेन, release of dopamine in the substantia nigra part of your brain, so that inhibit the GABA activity, so release of release of dopamine in the nigrostriatal tract or substantia nigra part, so that is related with the inhibition of GABA respect. GABA क्या है भाई, GABA भी inhibited neurotransmitter है. So if dopamine released in the substantia nigra, that will inhibit the GABA inhibit करेगा. And remember यहाँ पे in the brain two neurotransmitters work together. यहाँ पे रहेगा डोपामाइन, यहाँ पे रहेगा आपका एसिटिलकोलिन. So if dopamine level is increased, if dopamine activity is increased, right, so then acetylcholine activity will be decreased. If dopamine is decreased or if GABA is decreased, so acetylcholine will increase. So यहाँ पे dopamine release causes the inhibition of GABA in the in the Parkinsonism. There is one disease known as the Parkinsonism. There is a degeneration of dopamine containing neuron in the substantia nigra. अगर यहाँ पे डोपामाइन का डेफिशिएंसी होगा, if there is a deficiency of dopamine in the substantia nigra, that causes the Parkinsonism. So in the substantia nigra part of your brain, dopamine release causes the inhibition of GABA, okay, and decrease the level of dopamine in the substantia nigra part causes the Parkinsonism. In this tract leads to, and lack of dopamine leads to Parkinsonism. Lack of dopamine leads to increase the acetylcholine activity, which causes the extrapyramidal symptoms. Now dopamine agonist, अगर आपने dopamine agonist मतलब those drug which increase the activity of dopamine, so dopamine agonist will cause pseudo Parkinsonism in this case, and dopamine agonist will cause pseudo Parkinsonism, which is a reversible in this case, and dopamine antagonist will cause dyskinesia, muscle का tone खराब कर देगा, dyskinesia, right? So this part is related with the Parkinsonism. यहाँ पे dopamine का कम हो गया level, so will suffer from Parkinsonism. Decreased or degeneration of dopaminergic neuron in the substantia nigra leads to Parkinsonism, है ना. Increased dopa leads to excessive acetylcholine activity, right? In the mesolimbic system, in the mesocortical tract, so what is the function of dopamine? So यहाँ पे it has a regulation of affect, reinforcement, psychomotor functions and sensory perception. So release of dopamine in the mesolimbic system. Release of dopamine in the mesolimbic system causes the effect. Effect मतलब है ना, perception, thoughts, ना, affect जो होता था affect. So analyzing the information, analyzing the perception, and formation of pattern, है ना, formation of reactive pattern, that is affect. Then reinforcement of thought, psychomotor functions like and sensory perception. So अगर dopamine यहाँ पे mesolimbic system में बढ़ गया, तो if dopamine activity is there increased in a mesolimbic system, so that is related with the psychosis. मतलब यहाँ पे mesolimbic system में अगर dopamine का activity बढ़ गया,
तो आप साइकोसिस हो जाओगे, दैट विल इंक्रीज द साइकोसिस. तो मेंटल क्लाउडिंग है ना, ओवर एक्टिवनेस, violent behavior, that will be governed by this mesolimbic system in the brain. So there is a increased activity of dopamine in this system, in this mesolimbic tract of your brain और mesolimbic system और mesocortical tract. तो इसकी वजह से ये सब साइकोसिस होता है. So if there is है ना, there is increased activity of, if there is increased dopamine release in the mesolimbic system that affect your है ना perception, thought process, that affect your है ना cognition and है ना cognition, effect and cognition, and that causes the sensory perception, because this area is responsible for the sensory perception, thought, forming a thought pattern, and that's why increased dopamine in this area causes the psychosis. And increased dopamine in this area causes the psychosis. Now drug which increases the dopamine level in this, drug which increases the dopamine level in this area or dopamine agonist in this area will cause psychomotor activity, will cause increase in the psychomotor activity and reinforcement. High dose can cause psychosis. Drug which are antagonist to dopamine in this area, they can decrease the psychomotor function. मतलब आपको जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही पे समझना है. क्या रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग? तो दे विल ब्लॉक द dopamine. They are the dopamine receptor antagonist in the mesolimbic system. They will block the dopamine in the mesolimbic system because this mesolimbic system increased level of dopamine is related with the psychosis, because that part of brain is related with the thought process and psychosis. Okay, so those drug which increases the dopamine level or dopamine agonist in this area will cause psychosis, and dopamine antagonist will have antipsychotic function. Right now, dopamine is also present in the hypothalamus. So release of dopamine will cause decrease in the prolactin activity from anterior pituitary. So what is the role of dopamine in the hypothalamus? hypothalamus में क्या रोल है dopamine का? So release of dopamine in the hypothalamus will decrease the prolactin release from the anterior pituitary. यहाँ पे अगर dopamine का यहाँ पे dopamine release हो गया, release of dopamine will decrease the prolactin in the anterior pituitary, decrease the release of prolactin anterior pituitary. और dopamine यहाँ पे बढ़ गया, so that can cause dopamine agonist, for example pergolide, they can cause hyperprolactinemia. प्रोलैक्टिन बढ़ा देगा. अगर डोपामाइन एगोनिस्ट यूज किया तो वो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा देगा, बिकॉज डोपामाइन है ना, dopamine antagonist will cause endocrine dysfunction like gynecomastia and amenorrhea, है ना. मतलब dopamine का रोल क्या है in hypothalamus? In the hypothalamus, dopamine has a very important role. So release of dopamine will control the release of prolactin from anterior pituitary, है ना. मतलब dopamine रिलीज होता है तो prolactin कम रिलीज होता है यहाँ पे, है ना. डोपामाइन एगोनिस्ट क्या करेगा? डोपामाइन एगोनिस्ट क्या करेगा, है ना, विल मोर डिक्रीज इन द प्रोलैक्टिन. डोपामाइन एगोनिस्ट लाइक परगोलाइड, एग्जांपल इज अ परगोलाइड, विल डिक्रीज द प्रोलैक्टिन एंड दे आर यूज्ड इन द हाइपर प्रोलैक्टिन. इसमें प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ चुका है, उसमें यूज करेंगे. एंड डोपामाइन एंटागोनिस्ट क्या करता है? दे विल कॉज एंडोक्राइन डिसफंक्शन लाइक गायनेकोमास्टिया, अमनोरिया, गैलेक्टोरिया, है ना, प्रोलैक्टिन रिया. मतलब यहाँ पे प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा. अगर डोपामाइन कंट्रोल करता है, डोपामाइन नहीं है तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा. डोपामाइन एगोनिस्ट विल कंट्रोल द प्रोलैक्टिन रिलीज, डोपामाइन एंटागोनिस्ट विल increase the dopamine release, increase the prolactin release, and that's why most of the antipsychotic drugs, they are having adverse effect of gynecomastia, amenorrhea, galactorrhea. Prolactin बढ़ा देगा, right? In the chemoreceptor trigger zone, in the CTZ, in the chemoreceptor trigger zone, what is the effect of dopamine? So activation of dopamine receptor will cause emesis.
And in the CTZ, in the chemoreceptor trigger zone, dopamine activation causes the emesis और vomiting. तो vomiting करेगा यहाँ पे. तो CTZ में अगर डोपामाइन का लेवल बढ़ गया तो vomiting हो जाएगा. Activation of dopamine receptor in the CTZ causes the emesis, and dopamine agonist they can cause emesis. So dopamine agonist, for example, apomorphine. Apomorphine is an emetic drug used to produce the vomiting, and dopamine antagonist they are anti-emetic drugs. तो पूरा आपका इसी स्लाइड के ऊपर डिपेंड है सभी. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको ये स्लाइड समझ के ले लो. Dopamine activity is present in the substantia nigra part of your brain, mesolimbic system of your brain, hypothalamus, as well as chemoreceptor trigger zone of your brain. Now, dopamine has a role in the different role in the substantia nigra part. So, release of dopamine will inhibit the release of GABA. So, dopamine release in the nigrostriatal tract will inhibit the GABAergic neuron to release the GABA. So, if there is inhibition of GABA, so there is a overactivation of acetylcholine. There is a excessive activity of cholinergic system. That's why it can produce the extrapyramidal symptoms. Extrapyramidal symptoms. ये क्या होते हैं अपन देखेंगे. Extrapyramidal symptoms क्या होते हैं? We'll see. Right? So extrapyramidal symptoms means that is the symptoms of Parkinsonism. So dopamine agonist. It can cause pseudo-Parkinsonism in this area, and dopamine antagonist will cause dyskinesia. And whole Parkinsonism is based upon this concept. Then in the mesolimbic system, dopamine release, and dopamine has a regulation of your thought process, effect, reinforcement, psychomotor functions, perceptions, etc. Now dopamine agonist, those drugs which increase the dopamine will cause increase in the psychomotor activity, or they can cause psychosis. And drug antagonist to dopamine in this mesolimbic system, they can act as an antipsychotic. Dopamine antagonist will decrease the psychomotor function. That's why antipsychotic drug, they are nothing but the dopamine receptor blocker. Okay? Dopamine receptor block here is part में. Okay? So blockage or blocking or antagonist of dopamine receptor in the mesolimbic system is related with the antipsychotic effect. तो antipsychotic drug dopamine को block करेंगे किसमें? mesolimbic system में. Hypothalamus में क्या रोल है? In the hypothalamus, dopamine release will decrease the prolactin release from anterior pituitary. Prolactin क्या है? Prolactin is one of the hormone. It is a hormone. So in the hypothalamus, release of dopamine will decrease the release of prolactin from anterior pituitary. अगर डोपामाइन का यहाँ पे लेवल कम हो गया तो क्या होगा? प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा, एंड दैट कैन कॉज, है ना, दैट कैन कॉज हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया. राइट. तो डोपामाइन एगोनिस्ट क्या करेगा? ज्यादा डोपामाइन बनेगा, and a dopamine agonist will release more dopamine, which can decrease more prolactin. That's why dopamine agonist example is a pergolide. Pergolide, which is used in the treatment of hyperprolactinemia. Pergolide is used in hyperprolactinemia because it will release more dopamine in the hypothalamus, which will decrease the prolactin. Antagonist of dopamine in this area. Antagonist of dopamine in this area will cause endocrine dysfunction like gynecomastia, amenorrhea, and galactorrhea. Chemoreceptor trigger zone में dopamine का क्या रोल है? Dopamine has a important role in this feature. So activation of dopamine receptor in this causes the emesis, and that's why agonist will cause emesis. Like apomorphine is a agonist to the dopamine receptor in the CTZ. It is a emetic drug. It is used to induce the vomiting. And dopamine antagonist, they are used as anti-emetic. Right? तो देखो आपका साइकोसिस कहाँ पे हो रहा है? साइकोसिस क्यों हो रहा है? Why there is a schizophrenia, mania? Because of the increased dopamine level in the mesocortical tract. यहाँ पे आपका because of increased dopamine activity in this area, mesolimbic system, there is a psychosis. तो आपको क्या करना है? डोपामाइन को ब्लॉक करना है. बट डोपामाइन कहाँ पे है? डोपामाइन आपका है ना,
डोपामाइन आपका यहाँ पे भी है, डोपामाइन आपका यहाँ पे भी है, डोपामाइन आपका यहाँ पे भी है. तो in the other part of brain also dopamine has an important role. So if you block the dopamine and drug cannot block dopamine in a particular area. जो डोपामाइन एंटागोनिस्ट है वो डोपामाइन को dopamine antagonist will block the dopamine receptor in all area. तो वो सिर्फ मेसोलिम्बिक सिस्टम में ब्लॉक नहीं करेगा. दैट्स व्हाई अदर एरिया में ब्लॉक होगा तो वहां पे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट. तो डोपामाइन ब्लॉक, dopamine receptor blockage or blocking of dopamine receptor or antagonism of dopamine receptor is desired in the mesolimbic system so that your psychosis will be relieved. But blockage of dopamine in the substantia nigra will cause Parkinsonism. Dopamine blockage in the hypothalamus will cause gynecomastia and galactorrhea. Blocking of dopamine in the CTZ will cause anti-emetic action. So, है ना, that's why most of the antipsychotic drug are also anti-emetic. Say chlorpromazine, है ना, prochlorpromazine, they are having anti-emetic action because they will block the dopamine over here, which is desired in case of psychosis, and they will block the dopamine over here, which is responsible for the anti-emetic effect. But the blockage of dopamine in this area leads to Parkinsonism or extrapyramidal symptoms. That's why most of the antipsychotic drugs, they are having extrapyramidal adverse effect or extrapyramidal symptoms as adverse effect, or they can cause Parkinsonism. And all the dopamine antagonists will also increase the prolactin level of your body. Because of the blockage of dopamine in this area, there is a excessive prolactin release known as that can lead to gynecomastia, galactorrhea, etc. So this is very very important. यहाँ पे आपको इस चीज को समझ लेना है. बाबा क्या होगा, सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट में डोपामाइन का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ डोपामाइन इन द मेसोलिम्बिक सिस्टम? Role of dopamine in the hypothalamus, role of dopamine in the chemoreceptor zone. So increase the activity of dopamine in this area responsible for the psychosis. So here you have to block, but you don't have drugs which can selectively block a dopamine in this mesolimbic area. So dopamine यहाँ पे भी है, so they will block the dopamine in the substantia nigra also. They will block the dopamine in the hypothalamus also. They will block the dopamine in the CTZ area also. And that's why तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट होगा आपको, ये भी यहाँ पे जो है वो इसकी वजह से भी एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे, यहाँ पे भी एडवर्स इफेक्ट. That's why these antipsychotic drugs have adverse effect, right? Now you can see over here again dopamine and acetylcholine in the brain, they are okay. तो एक का कम हो गया तो दूसरा डोमिनेट करता है, एक कम हो गया तो दूसरा डोमिनेट करता है. मतलब दो है ना, दो दोस्त है ना, एक डोपामाइन, एक दो दुश्मन है, मतलब डोपामाइन एंड एसिटिलकोलिन है ना. जैसे दो दुश्मन है, अगर एक का पावर कम हो गया तो दूसरा डोमिनेट करता है, दूसरा कम हो गया तो दूसरा डोमिनेट करता है, लाइक वाइज. सो इफ देयर इज इंक्रीज द डोपामाइन एसिटिलकोलिन है ना, if there is a decrease, okay, if there is an increase in the dopamine over the acetylcholine in substantia nigra, अगर डोपामाइन का लेवल और डोपामाइन का डोमिनेंस अगर ज्यादा हुआ है, if dopamine level is increased over acetylcholine in the substantia nigra part of your brain, so that leads to hyperkinetic state, Huntington's disease, Tourette syndrome and tardive dyskinesia. टूरेट सिंड्रोम क्या होता है? देयर इज वन सिंड्रोम नोन एज टूरेट सिंड्रोम. आपने एक मूवी देखा होगा, बॉलीवुड का मूवी है हिचकी. देयर इज वन मूवी नोन एज हिचकी. एक मूवी आया था देखो हिचकी ना, रानी मुखर्जी उसमें मेन लीड रोल में थी.
and movie was a Hitchcock. In that Hitchcock movie, Rani Mukherjee is suffering from Tourette syndrome. So there is a Tourette syndrome. है ना, Hitchcock आता है उसमें. Okay. So if there is a, है ना, if there is a increased increased dopamine level over acetylcholine level in the substantia nigra part, that is a hyperkinetic state, Huntington disease, tardive dyskinesia and Tourette syndrome. If there is increased dopamine in the limbic system or mesocortical tract, so that leads to euphoria, मतलब false feeling of well-being. हाँ ना. Then paranoia, paranoia मतलब क्या? पगलापन. paranoia मतलब पगलापन. भगवान से बात कर रहे हो. Psychosis, schizophrenia. So increased level of dopamine in the limbic system leads to psychosis disorder. Increased level of dopamine in the hypothalamus causes the hyperprolactinemia. No. Sorry. It causes the hypoprolactinemia. It causes the hypoprolactinemia. यहाँ पे hypoprolactinemia. यहाँ पे hypoprolactinemia, because dopamine will decrease the prolactin release. So dopamine increased in this area will decrease the prolactin release, and that can cause hypoprolactinemia. Now, decrease the dopamine level over the acetylcholine. यहाँ पे dopamine level कम हो गया, acetylcholine level बढ़ गया. Decrease in the dopamine over acetylcholine in a substantia nigra part result in the hypokinetic state and Parkinson disease, acute extrapyramidal symptoms and dystonia. Increase the or decrease the decrease the dopamine level over acetylcholine level in the hypothalamus causes hyperprolactinemia. तो डोपामाइन बढ़ गया, एसिटिलकोलिन के कंपैरिजन में डोपामाइन अगर बढ़ गया कौन से एरिया में, सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट में, तो यहाँ पे हाइपरकाइनेटिक स्टेट, हंटिंगटन्स डिसीज, टूरेट सिंड्रोम एंड टार्डिव डिस्काइनेशिया. डोपामाइन बढ़ गया एज कंपेयर टू एसिटिलकोलिन इन द लिम्बिक सिस्टम causes euphoria, paranoia, psychosis, schizophrenia. डोपामाइन बढ़ गया एज कंपेयर टू एसिटिलकोलिन इन द हाइपोथैलेमस causes the hypoprolactinemia. मतलब क्या, प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन द प्रोलैक्टिन लेवल. नाउ if there is a decreased dopamine over acetylcholine in the substantia nigra part, hyperkinetic states, Parkinson disease, extrapyramidal syndrome आएगा, dystonia हो जाएगा मसल का. And decreased dopamine over acetylcholine in the hypothalamus will cause hyperprolactinemia. Okay, तो ये दोनों के ऊपर ये सब कुछ चलता है. Now dopamine is a neurotransmitter which is an inhibitory neurotransmitter in the brain that will act on its receptor known as dopamine receptor. Now you have different type of dopamine receptor. डोपामाइन के different type के receptor होते हैं. Like for example, you can see over here dopamine receptor and their important characteristics. So previously है ना, पहले तो previously dopamine 1 receptor, D1 receptor, D2 receptor, D3 receptor and D4 receptor. So previously they are known as the D1, D2, D3, D4, D5. पहले जमाने में उनको बोलते थे D1 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर, D4 रिसेप्टर, D5 रिसेप्टर. जैसे ये D1 है, ये D2 है, D3, D4, D5. But nowadays they are called differently. Like D1 receptor is also known as D1A. D1 receptor is also known as D1A, and dopamine by binding to a D1 receptor or D1A receptor will increase the intracellular cyclic AMP and a micromolar dopamine sensitivity. So these kind of receptor they are having and a
माइक्रोमोल भी अगर है डोपामाइन का, दे आर सेंसिटिव एंड इन अ पेरिफेरल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, macromolar dopamine sensitive in the peripheral dopamine receptor. Now D2 receptor, so also known as D2A, D2 receptor को ही अपन बोलते हैं D2A आजकल. So again it is related with the decrease in the cyclic AMP, decrease in the nanomolecular sensitivity of dopamine, blocking the receptor associated with the Parkinsonism effect of the typical antipsychotic. So blocking of D2 receptor by antipsychotic drug causes the Parkinsonism. Now D3 receptor also known as D2B. D3 को अपन D2B बोलते हैं, and that causes the decrease in the cyclic AMP in the intracellular. And when dopamine will combine with the D2B, there is a decrease in the cyclic AMP. है ना? Dopamine receptor 4 also known as the D2C. So that is related to the decreased cyclic AMP and that is blocked by clozapine. Now D5 receptor also known as D1B. D1B also increases the cyclic AMP. मतलब कौन सा रिसेप्टर कैसे एक्ट होता है? Dopamine will bind to its receptor and activate this receptor in the different system. Right? Now, early signs of schizophrenia and in a young adulthood. तो schizophrenia के साइंस क्या है? A schizophrenic patient is a nervous. Schizophrenic patient क्या रहेगा? Nervous रहेगा. Schizophrenia is also known as a split mind. Schizophrenia is also known as a split mind. Splitting of mind. उसको दो मन रहेंगे, उसको दो माइंड रहेंगे, दो माइंड. तो नर्वसनेस, देन रेस्टलेसनेस, मतलब एक जगह पे बैठा नहीं रहेगा, एक जगह पे वो बैठ ही नहीं सकता पेशेंट, है ना. तो फटक से खड़ा हो जाएगा, इधर जाएगा, फिर से आएगा, फिर से बैठेगा, फिर से उठेगा, इधर जाएगा. रेस्टलेसनेस, तो ही विल नॉट रेस्ट एट वन प्लेस. नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस. देयर इज अ डिप्रेशन टू द schizophrenic पेशेंट. डिप्रेशन रहेगा. डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑलवेज एंजाइटी रहेगा उसको. ट्रबल इन द कॉन्सेंट्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा. तो schizophrenic patient will have nervousness, restlessness, depression, anxiety, trouble in the concentrating, then unclear thinking. उसका thought process क्लियर नहीं है. unclear thought, mental clouding, diminished self confidence, मतलब diminished self confidence, मतलब self confidence उसमें रहेगा नहीं. So will not have self confidence. Low energy, उसमें energy level कम रहेगा, low energy level, है ना. Severe decline in the performance, severe decline in the work or school performance. Then social withdrawal, है ना, अपने आप को अकेला कर लेगा. Social withdrawal, अपने आप को अकेला कर लेगा. These are the signs of schizophrenia in the adulthood. Okay? Now, signs of mania. Maniac patient क्या होता है? Maniac patient will not have sleep, less sleep, ना sleep नहीं होगा, कोई insomnia आया होगा. Then irritability, always वो irritation करेगा, है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, always irritability. Then flight of ideas, मतलब एक ही टाइम पे वो चार चीजें सोचेगा. एक ही टाइम पे उसको लग रहा है मैं बीच पे हूँ, एक ही टाइम पे लग रहा है बिल्ली खाना खा रही है, एक ही टाइम पे उसको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे. क्लाउडिंग, मेंटल क्लाउडिंग बोलते हैं. देन रैपिड स्पीच, बहुत ही ज़्यादा बोलेगा. एंड क्वालिटी ऑफ स्पीच इज ऑल्सो बैड, है ना, मतलब गाली देगा, है ना, ऐसा. रैपिड स्पीच. देन मैनियक पेशेंट विल हैव हाइपर सेक्सुअलिटी, ऑलवेज उसके माइंड में ये चलता रहेगा. देन मैनियक पेशेंट हैव रिस्की बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या रहेगा? रिस्की. दैट इज अ मैनियक पेशेंट. ओके, now we'll see the classification of antipsychotic drugs. Very important part, classification of antipsychotic drug.
बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ schizophrenia and mania, known as antipsychotic drugs. Drug used in the treatment of mania and schizophrenia, antipsychotic drugs. They are also known as a major tranquilizer. They are also known as a major tranquilizer. याद रखना है आपको, antipsychotic drugs are known as a major tranquilizer and minor tranquilizer मतलब anti anxiety drug. Anxiolytic are known as a minor tranquilizer. Sedative hypnotic क्या है? Minor tranquilizer. मेजर ट्रैंक्विलाइजर मतलब क्या है? दे आर नोन एज एंटीसाइकोटिक्स और न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स और मेजर ट्रैंक्विलाइजर. रिमेंबर ये सिनोनिम्स. नाउ दीज ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू डिपेंडिंग ऑन देयर chemistry. Chemically they are classified in a different ways. Okay, so there are two major classes therapeutic point of view से. पहला क्लास है आपका टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. पहला क्लास टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड दूसरा क्लास है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. Antipsychotics are classified as two major classes. First one is a typical antipsychotic. Typical मतलब क्या है? Typical antipsychotics are also known as the first generation. Typical antipsychotic drugs are also known as the first generation antipsychotic. And atypical antipsychotics are known as second generation antipsychotics. याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स एंड सेकंड क्लास इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स. तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को ही अपन बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स. एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को अपन बोलते हैं सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स. तो देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, typical antipsychotics and atypical antipsychotics. Typical antipsychotics are also known as the first generation antipsychotics. Atypical antipsychotics are also known as the second generation antipsychotics. Now, second generation antipsychotics, they have different mechanism. इनका mechanism अलग है. Mostly they will block the serotonin and noradrenaline. And first generation, they are having डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर. फर्स्ट जनरेशन क्या करेंगे? डोपामाइन को ब्लॉक करेंगे. सेकंड जनरेशन को डोपामाइन को ब्लॉक कम करेंगे, लेकिन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमाइन को ज्यादा ब्लॉक करेंगे. राइट. सो एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन द केमिस्ट्री, सम है ना फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स. तो फर्स्ट मेजर क्लास इज phenothiazines. Phenothiazines means what? They are having phenothiazine ring in the structure. So phenothiazines are again divided into three classes. Phenothiazines मतलब यहाँ पे 3-membered रिंग रहेगा, उसमें सल्फर एंड नाइट्रोजन. phenothiazine ring, right? So phenothiazine derivative. So in that also drugs having aliphatic side chain, drugs having piperidine side chain, and drug having piperazine side chain. Aliphatic side chain containing phenothiazine. देखो यहाँ पे है ना, aliphatic side chain containing phenothiazine. या इसको ही अपन बोलेंगे सेकंड जनरेशन, कोई अपन बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन. बाकी जो है फर्स्ट है. इसको बोलते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. तो टिपिकल में आता है देखो phenothiazines. इन द phenothiazine you have three classes. So phenothiazine with the aliphatic side chain. In this example is a chlorpromazine, triflupromazine. Second class आता है phenothiazine में piperidine side chain. In this piperidine side chain is the example is thioridazine. Third class in the phenothiazine, piperazine side chain. In this you have trifluperazine and fluphenazine. तो ये phenothiazines में क्या आता है? जीन. यहाँ पे आपको जीन ZIN.
All these drugs, they are having zine. So chlorpromazine, triflupromazine, then thioridazine, then trifluperazine, then fluphenazine. All these are the phenothiazine derivative. इसमें क्या रहेगा जीन ना, phenothiazine जलाए नहीं, ये जीन है ना, chlorpromazine, triflupromazine, thioridazine, है ना, trifluperazine, fluphenazine, सब में क्या आता है, जीन आता है, जीन. तो all they are the phenothiazine derivative. सब में जीन आता है, तो याद रखना है आपको. तो सेकंड है ना, सेकंड सब क्लास इन द टिपिकल एंटीसाइकोटिक, दैट इज द ब्यूटाइरोफिनोन. Butyrophenol. Example is nothing but the haloperidol, trifluperidol and fenfluridol. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव, haloperidol, trifluperidol, fenfluridol, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. देन थर्ड क्लास इन द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, thiazanthine. So example is the flupentixol. There is one more drug है ना, उसमें भी थिक्सोल आता है. फ्लुपेनथिक्सोल इज अ thiazanthine derivative. Then in the typical antipsychotics, four subclass other heterocyclic compounds, in that pimozide and loxapine. Pimozide, all these are known as the first generation antipsychotic drugs. ये जो phenothiazines, butyrophenol, thiazanthine and the other वाला है, so all they are known as the टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स. इनको ही पूरा को टिपिकल बोलते हैं और फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक बोलते हैं. तो देखो इसमें जीन आएगा, डॉल किस में आता है, ब्यूटाइरोफिनोन, पेरिडोल, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लुपेरिडोल, फेनफ्लुरिडोल, ऑल दिस आर द ब्यूटाइरोफिनोन. देखो क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आ चुके हैं. तो ऑल दिस राइट फ्रॉम दिस, जितने भी है इनको क्या बोलने का, फर्स्ट जनरेशन. ऑल दे आर नोन एज द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. ऑल दे आर नोन एज द फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स और आल्सो नोन एज द टिपिकल, आल्सो नोन एज द टिपिकल एंटीसाइकोटिक. क्वेश्चन आता है. Now atypical, second class atypical antipsychotics or second generation antipsychotics, इसको second generation होता है. तो in that देखो clozapine, risperidone, then olanzapine, quetiapine, है ना, aripiprazole, then ziprasidone, amisulpride and zotipine. इसमें याद रखना है पिन डोन है ना, पिन डोन, then zol, पिराइड. देखो पिन मतलब क्या, पिन मतलब क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्वाइटापिन, देन जोटेपिन. तो ऑल दिस आर द पिन. डोन मतलब क्या, डोन मतलब रेस्पेरिडोन है ना, पैलिपेरिडोन, उसके रेस्पेरिडोन के डेरिवेटिव जिप्रासिडोन, रेस्पेरिडोन, पैलिपेरिडोन, जिप्रासिडोन है ना. तो ऑल दे आर द पिन, डोन, पिराइड एंड जोल. पिराइड मतलब क्या, लिवोसल्पिराइड एंड अमीसल्पिराइड, एंड जोल मतलब एरिपाइप्राजोल. दैट्स इट. सो पाइन है ना, पिन डोन है ना, पिन डोन पिराइड एंड जोल, पिन डोन पिराइड जोल. यू कैन रिमेंबर दिस. और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. एज इट इज GPAT 2022, क्लोजापिन इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ना. एटिपिकल की एग्जांपल याद रखो, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, मतलब क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते ही आता है. इंपॉर्टेंट है, कल भी लूंगा मैं एक बार क्लासिफिकेशन. tomorrow also I'll take classification once more. Remember, okay. Next we'll see the classification union different book. So antipsychotic drugs, they are classified into two classes. Now first one is a typical antipsychotic or first generation antipsychotic. So typical antipsychotics or neuroleptic or they will block the dopamine 2 receptor. They are the D2 receptor blocker. They are having high affinity for D2 as compared to 5:2.
D2 रिसेप्टर को ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, 5:2 को कम करते हैं. They have high D2 by 5:2 affinity. They will mostly block the D2 receptor. As it is GPAT 2023 में क्वेश्चन पूछा है. Typical antipsychotic act as antipsychotic by blocking the which receptor? D2 receptor. D2 receptor blockers are typical antipsychotic. In that, phenothiazines, chlorpromazine, thioridazine, trifluperazine and fluphenazine. इसमें क्या है? पिपरेजिन साइड से नहीं, इसमें क्या है? पिपरीन है. इसमें क्या है? इसमें एलिपेटिक साइड. phenothiazine derivative, chlorpromazine, thioridazine, trifluperazine, fluphenazine. Then thiothixanes में आता है fluphenthixol and thiothixine. Thiothixine. Again, butyrylphenols, haloperidol, droperidol, and fenfluridol. Then miscellaneous में आता है pimozide, loxapine, and molindone. Now, atypical antipsychotics are also known as second generation antipsychotics. They act by other mechanism. They have low D2 receptor blockage activity, more 5:2 receptor blocker or serotonin receptor blocker. Also, they will block the alpha receptor, alpha noradrenergic receptor. Okay. For example is a clozapine, olanzapine, quetiapine, then anisapine, then zotapine. ये क्या है? पिन. zotapine, anisapine, clozapine, olanzapine, quetiapine. Then डोन. पिन के बाद में डोन. डोन कौन है? रेस्पिरिडोन, है ना? रेस्पिरिडोन, पेलिपेरिडोन, इलोपेरिडोन, पेलिपेरिडोन, है ना? जिप्रासिडोन, डुरासिडोन. तो पिन, डोन, है ना? पिन, डोन, pyramid and zone. Pindone, pyramid and zone. Pyramid में आता है levosulfide और zone में आता है erypiprazole and cetinidone. These are the atypical antipsychotics. Typical, atypical. ठीक है. तो आज अपन सिर्फ क्लासिफिकेशन लेंगे and कल अपन फिर से लेंगे. Now third is nothing but the drug used in the mania and bipolar disorder. तो mania and bipolar disorder इसमें आता है mood stabilizer, known as lithium carbonate. Lithium carbonate is known as mood stabilizer. Is a drug of choice in the bipolar disorder. Lithium carbonate, drug of choice in the bipolar disorder. It is a mood stabilizer. Then in the bipolar disorder, some anticonvulsant, anti-epileptic drugs are also used. For example, in आपका sodium valproate, carbamazepine and lamotrigine. ये drugs भी use करते हैं. Then some atypical antipsychotics are also used in the mania and bipolar disorder, like olanzapine, risperidone, quetiapine, and erypiprazole. Quetiapine, erypiprazole, olanzapine. So these are the drugs used in the mania, right? And hallucinogens we already seen. So I will stop here. I hope you have understood. Tomorrow also I will take this take this whatever part I have today taken. I will take in a fast, rapid manner, and tomorrow we'll see the classification once again, and then we'll start the drugs, right? So I hope everybody has understood. If you have understood, write yes in the comment box. समझ में आ गया तो yes लिखिए comment box में. तो कल फिर से क्लासिफिकेशन लेंगे एंड ड्रग्स लेंगे. Very important chapter. This chapter is important for your upcoming exams. GPAT Niper DI Pharmacist.